over by this time? Okay, lovely. So there are certain things which I want to inform. I think you all were there on that day. So course features you are familiar with, right? Yes. Okay. So basically, today we will start our lectures. Today and tomorrow you will have your lecture. Okay. Then we will have a small break for Holi. Okay. Because what happens once we reach a good potential of a class, एक फ्लो आ जाता है, उसके बाद बीच में ब्रेक होगा, बिकॉज होली में 4-5 दिन की छुट्टी देनी होगी, तो वो डिस्टर्ब होगा, तो आपको भी प्रॉब्लम होगी होली के बाद कैच करने में. सो विल डू वन थिंग, विल स्टार्ट टुडे एंड टुमारो, विल डू द बेसिक्स, थोड़ा आपको फेमिलियर करा दे. मेजर पोर्शंस हम आपके स्टार्ट ही होली के बाद करेंगे. इज दैट ओके विथ ऑल ऑफ यू? फाइन. नंबर 1. नंबर 2, so today polity class is there, that will be taken by Satya sir. So in polity, what all sections do you study in NCERT? Okay, so one is your Indian polity. This we are starting first. Okay, Satya sir will cover this. There is one more NCERT in class 11th which talks about political theory. In this, the liberty, equality, justice, freedom, these values are discussed in details. Fine. This will be covered later and this will be covered by Rohit sir. Now there is one more section. This is actually one of your class 12 political science NCERT. However, ideally this is history part, post independence. So this also we might cover after polity or maybe after history. Why? Because this is actually having the flavor of modern history. ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड ये कराने के बाद अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सो इसलिए आई वांटेड टू like discuss this with you so that you don't get confused. So we will start, this all is in the polity, but we will start with Indian polity by Satya sir. ठीक है, so for this week there will be no test because 2 class ही हैं. ठीक है, but once we resume our classes then we will have test, weekly class test. One will be your prelims based test, next will be your mains based test. ठीक है, anything else you want to discuss, ask? You have got the handout. ठीक है, उसमें भी आप देखोगे यूपीएससी का सिलेबस है. ऑलवेज कीप दैट ऑन योर टेबल, इन योर बैग और इन योर फोल्डर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल टेल यू व्हाट आर गोइंग टू बी योर रीडिंग्स. आपके वो कौन से एरियाज होंगे जिसमें आप ध्यान से पढ़ोगे, न्यूज़पेपर में कौन सी चीजें हैं जो आपसे रिलेटेड है. तो सिलेबस इज योर बिगेस्ट गाइड इन यूपीएससी प्रिपरेशन. ठीक है, सिलेबस है एंड लास्ट में यू हैव दैट प्लानर, द लेक्चर प्लान फॉर पॉलिटी. सो दैट इज द प्लान विच वी विल फॉलो टू कंप्लीट दिस पार्ट. ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के 10 लेक्चर हैं, इसके अलग से होंगे, देन पोस्ट इंडिपेंडेंस के अलग होंगे. ठीक है, दैट पार्ट इज कवरिंग ओनली योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई वी आर डूइंग एक्सक्लूसिवली? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज योर प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड. अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम है. पोस्ट इंडिपेंडेंस तो प्रीलिम्स में आता भी नहीं है. ज्यादा क्वेश्चंस किधर से? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी से. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, so I welcome you all once again to Shubhra Ranjan IAS. I hope you will have a good time here. Try to be interactive. Questions हैं तो टीचर से पूछिए. That is what you have paid for, right? So make sure that all your doubts get resolved here. If you have any issue, always come to me. Okay, I'll be administering and managing your course overall. Going forward, you will also get one mentor. Okay, हम होली के बाद आपको उन मेंटोर से मिला देंगे. मेंटोर के साथ ऑल्सो यू कैन डिस्कस योर प्लान, योर स्ट्रेटेजी, योर इश्यूज.
अगर कोई प्रॉब्लम है, टीचर से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी एकेडमिक हो या अदरवाइज भी, आप हमेशा मेंटोर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, डन, ओके, थैंक यू। यस, ऑल अदर लाइक 6 7 पे तो बहुत बेसिक्स है। 9 10 में इफ यू विल सी, 9 10 इज अ गुड बुक। तो व्हाट यू कैन डू, ये जो आपका बीच का भी टाइम है उसमें 9 10 का पार्ट यू कैन रीड, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी बेसिक। टीचर्स कवर करेंगे, बट इफ यू ऑल्सो रीड इट बाय योर ओन, इट विल गिव यू सम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज द वे that those books 9 10 book discuss the decentralization, devolution of power, importance of power sharing, ये डायरेक्टली यूपीएससी में कभी नहीं आएगा, ठीक है, बट आपको बहुत अच्छी लाइंस मिलेंगी, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, एक अच्छा बेस मिलेगा। टीचर्स ये डिस्कस करेंगे क्लास में ये, बट डिसेंट्रलाइजेशन है तो टीचर ने एक पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्कस कर दिया 5 मिनट में, बट उसमें एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है। सो व्हेन यू सी दैट 9 to 10 बेल्जियम और श्रीलंका को कंपेयर किया है पावर शेयरिंग का, राइट, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। इट टेल्स यू कि पावर को शेयर करना क्यों है, राइट। तो वो बेसिक एनसीईआरटीज है, it's definitely recommended that you read them on your own as well, because उसमें कहीं आप फंसोगे नहीं। 6 to 9 में करके यू कैन कीप इट असाइड। जो टफ है, जो मेन है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, दोज आर 11 12 एनसीईआरटीज एज फार एज पॉलिटी इज कंसर्न। सी इट विल डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, आई सेड ना कि पॉलिटी में ये सीन है, पॉलिटी में 8 to 10 वाली जो बुक्स हैं उससे क्वेश्चंस नहीं आते इन जनरल। व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी बेसिक। सेम फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी में 8 to 10 में अगर आप एनसीईआरटी देखो, सो दे हैव लाइक स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर एक्सेट्रा, सो वहां से नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इट्स वेरी बेसिक, इट्स जस्ट टू मेक यू टू, हाँ, आपको ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट क्या होता है, पॉलिटी में पढ़ते क्या हो आप, ठीक है, वो जो एक बच्चे होते हैं ना 7th 8th 9th 10th, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए यू कैन डू दैट, यू कैन रीड इट एटलीस्ट फॉर बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। अब जैसे ज्योग्राफी में क्या है, 9th 10th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, बट अब उसमें क्या सीन है, 9th की एनसीईआरटी है, सिमिलर सिलेबस है आपका 11th में, ठीक है? तो टीचर अब ये नहीं करेगा कि 9th का एग्रीकल्चर अलग 11th का अलग से, नो, ही और शी विल इंटीग्रेटेड, सिंपल, ठीक है। यस, 6, yes, नो 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 नो, आई मीन आई वुड पर्सनली सजेस्ट दैट आप जब चल रहे हो पहले लीव कर लो, 6 to 8 वाली तो रीड कर लो जब क्लास में हो रहे हो, और इट वोंट टेक मच टाइम, बिकॉज उसमें अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल 6 या 7 की जो एनसीईआरटी है उसमें आप आईवीसी देखोगे, दैट इज 2.5 पेजेस, दैट्स इट। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, कवर टीचर्स सब कराएंगे, बट जो आप खुद कोई चीज पढ़ के उससे जब आप निष्कर्ष निकालोगे, उसमें आप फंसोगे, वो आप टीचर से पूछोगे, तो दैट विल यू नो आपको एक और अच्छी एज देगा, वो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग देगा, ठीक है। सो बेस टीचर्स आर covering the lectures on the basis of topic, not एनसीईआरटी। उनके माइंड में वो नहीं है कि क्लास 6 में ये है, 10th में ये है, उनके माइंड में ये है कि अच्छा ये टॉपिक है फेडरलिज्म, ये क्लास 11 में मेंशन है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई होप आई मेड सेंस, राइट, सॉर्टेड। चलो, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप क्लास के टाइम पे भी डाउट्स पूछ सकते हैं और क्लास के बाद में भी टीचर्स से इंडिविजुअली, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।
So good afternoon. My name is Satya Prakash, and I take polity classes in general studies and political science. So how many of you are from political science background? आपका? हाँ? Maths कर रहे हैं. You? Political science. BTech. Good. आप? BTech. Science. Okay. So all of you are pursuing the civil services only, right? And as a part of that, you're doing the NCRT course. Any of you doing the PSIR foundation course here already? Enrolled in PSIR foundation course? आप? हाँ. PSIR classes. कौन सा बैच था आपका? 2022 you did this. Which that was the July batch. Which one? July batch. Okay. Fine. So I think Shubhanshu must have introduced about the course. Okay. This is the NCRT course. Good thing about the course is that it will give you a good platform to start the hardcore preparation. Okay. But there's a limitation to this course that since the time allotted, the number of lectures and the scope of the NCRT is quite limited. So many times you might feel that we are just touching and going because this is the scope of it. If you see the other NCRTs, if let us see that geography NCRT, history NCRT, they have dealt in a greater detail. But the polity NCRT, the scope is very much limited. So when we do it in political science or in general studies, we go in greater depth. Okay. जनरल स्टडीज में भी डेप्थ में जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में यदि किया तो और भी ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं. इट इज़ रिक्वायर्ड. How many of you are going to give civil services with political science optional? ठीक है. आपका ऑप्शनल क्या है? एंथ्रोपोलॉजी आपने लिया है. आपका मैथ्स कौन सा? हाँ, अच्छा अभी सेलेक्ट नहीं किया, अभी सोच रहे हैं आप उस पर करके. एनीबडी एल्स? सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल आप ले रही हैं. आप साइंस. साइंस में भी कौन सा सब्जेक्ट लेके आप? ऑप्शनल. विच ऑप्शनल? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट. ठीक है. See, so because in political science we refer to theories also, theories and analysis. Here you are just going to read about the constitution. So first I'll show you the syllabus. Much. So there are two kinds of topics that I will take: the Indian Constitution and politics in post-independent India, what you also call as the post-independent history. Because in GS1, if you have seen the syllabus in General Studies 1, apart from the world history, ancient, medieval and modern, you also have post-independent India, जहाँ पे आपको emergency, party system, green revolution, liberalization, all that you have to study. So in this course, my part would be post-independent India and Indian Constitution at work. Okay. So first, give a heading. Right. Constitutionalism. Constitutionalism. Do you have the NCRT with you?
अमन, ये दूसरा एक पीपीटी में भेज रहा हूँ, उसमें एनसीईआरटी वाली बुक लगी हुई है, वो ओपन कर दो। मैं एक दूसरा पीपीटी भेज रहा हूँ, उसमें 2 स्लाइड्स और हैं। वाईफाई कौन सा है यहाँ पे? अभी जो भेजा है पीपीटी उसको ओपन करना। Meanwhile, you just write what is constitutionalism. What is constitutionalism? Right. Constitutionalism means a model of governance, where the law is supreme, Constitutionalism calls for restriction on the arbitrary powers, restrictions on the arbitrary powers of the state. Okay. Now, when we talk about constitution, we normally refer to a particular document. Where all the rules are written. Okay. Now, there's a theory of separation of power, which says that the governance would be distributed amongst 3 verticals: legislature, executive, and judiciary. Okay. Now, why this has been done? The first reason is that there has to be certain specialization. Legislature is responsible for making laws. Executive is responsible for implementing those laws. And then judiciary will take care of the fact that whether this action of the executive is as per the law or not. So this was originally given by Montesquieu, and it is called as separation of power. Now, there's an additional advantage of this particular system, that all the 3 branches, they are playing the role of having check and balance over the power of others. For example, in case of India, if legislature is making any particular law, that law will be implemented by the executives. That means any action of the executive will be judged by judiciary. Judiciary will see that when this particular action, it is saying that whether this action is as per the law or not, it will see this law and then it will judge that whether this action should be allowed or not. This is the basic function of judiciary. Legislature will make law, executive will implement it, judiciary will see that whether this is lawful or not. But later on, an additional responsibility of judiciary was added, and that was that judiciary can also see that whether this law is appropriate or not. अभी तक judiciary क्या देखता था कि action of the executive is appropriate or not,
Now the judiciary will also look into the fact that whether this law is appropriate or not. This was an additional responsibility. Then this law is coming from where? This is coming from constitution. Ultimately, everything that happens in any country happens because it has to be written in the constitution itself. If you say that in 2024 we are going to have elections, elections means what? Elections are the element of democracy, and whether India is a democracy or not, it is written in the constitution. In fact, the constitution, the very first part of the constitution, that is preamble, declares India as a democratic republic, sovereign, socialist, secular, democratic republic. So since we are a democracy, and therefore it is required that we should have free and fair elections. So judiciary initially was given the role of judging this action, then the role of judging this particular law, and then the role of judging the constitution itself. Now, if you have any slightest idea about polity, you must have read, there's a doctrine called doctrine of basic structure. Basic structure. Basic structure क्या होता है? Constitution is there. Now, you can make changes in the constitution. Howsoever good document you make, it will not be equally applicable throughout. Okay, maybe after 10 years, 20 years, 50 years, you will realize that the constitution requires certain amendments. And if you go by data, then there's a scholar who has analyzed the constitutions across the world from 1789 till 2005. And then, according to his calculation, any constitution survives for not more than 17 years on an average. 17 years. In fact, there have been countries like France जिन्होंने भी frequently change किया है. India is an exception in that way because we have just had one constitution since 1950 that is surviving till today. So any document that you make, it should change. Otherwise, it will become useless. And therefore, when you make any constitution, you provide the scope for amendment. Within Indian constitution, we have Article 368. All these articles will come. अभी introduction में मैं just बता रहा हूँ. So Article 368 says that Indian Parliament is responsible for the amendment of the Constitution. Indian Parliament. Amendment cannot be done by the state governments. It will be done by only by the Indian Parliament, that is Union Legislature. This amendment can be done by two methods. First method is that what we call as special majority. एक term use होता है special majority. It means that there should be a total majority of the house and 2/3 of present and voting. That is something required. In the second case, you also require the consent of different states. Why? Because India is a federal country as well. India is a federation. It is a union of states. It is a federal model. Federal model क्या होता है? The power is distributed at more than one level. So let us say if you are making any change in the constitution which has got implications for the states as well, उससे states भी प्रभावित हो रहे हैं. So of course you cannot make that change without taking the consent of the states also. So Article 368 tells you that how the constitution is to be amended. So any kind of document that you make should come up with this particular provision wherein amendment can be done. Now we often compare the Indian constitution with American constitution. American constitution को कितनी बार amend किया गया है? Any guesses? The constitution of USA has been amended only 27 times. Okay, since 1787. Okay, आप देखेंगे तब से अभी तक केवल 27 amendments हुए. Why? Because the process of amendment is quite tough in US. And secondly, it is not required also. Unlike India, India में कितने constitutions हैं? We have only one constitution. In India, we have just one constitution. But in US, there's one federal constitution and different states. That means 50 states will have their own constitution.
So what will happen that if there's a change needs to be done, तो फिर वो स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज करके काम चल जाता है, जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. And therefore we see less number of amendments in the constitution of US, but Indian constitution में काफी changes हुए हैं. Precisely how many amendments we have done? How many? हाँ, मतलब 106th amendment हमने किया अभी. Last we were talking about the women reservation bill. Women reservation bill की बात करते जो कि एक्ट बन के आता है 106th amendment act. Through this particular act, women have been given 1/3 reservation at the union and state level. So we have done 106th amendment already. Now, in fact, if you see the 73rd and 74th amendment, they were done in 92. And after that, we have done so many because it is required. Now, the very basic thing from where the constitution starts is the preamble. Preamble will tell you the objective of the Indian constitution. Why? Or it will tell you about the structure of the Indian constitution. It has been called as the identity card of Indian constitution. What is an identity card? A document जिसको पढ़ने के बाद किसी को भी आपके लाइफ के बारे में एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, you must be having identity card of your college, name, roll number, your college name, university name is mentioned. So the person will not know everything about you, but इतना पता चल जाएगा कि आप किस कॉलेज से हैं, आपका कौन सा ब्रांच है, मतलब which discipline, which subject you are studying, maybe in which year you are. So an indicative idea of your characteristic the person will know. Similarly, when you read the preamble of India, you will not understand everything, but the preamble of the Indian Constitution will tell you the brief structure of it. जैसे, what is the source of power for Indian Constitution? It will tell you the nature of the Indian state. It will tell you the objective of the Indian state. Objective क्या है? Justice, equality, fraternity, liberty is the objective of the Indian state. So a brief idea about the Indian Constitution you can get to know. क्योंकि यदि आप पढ़ते हैं कि इंडिया जो preamble में that it has been declared that India is a secular country, तो इतना तो आप कन्विंस हो जाएंगे कि कोई स्टेट रिलीजन नहीं होगा यहाँ का. दैट मीन्स स्टेट विल नॉट से दैट वी आर गोइंग टू प्रेफर दिस पर्टिकुलर रिलीजन. सो अ ब्रीफ आइडिया यू विल कम टू नो. And then there have been debates related to preamble, that whether it is a part of the Indian Constitution or not, whether it can be used by the judiciary to interpret the Constitution or not. But before that, the topic that we are talking about, constitutionalism. Constitutionalism means rule of law. It means that state cannot do anything that it wants. For example, currently maybe the most powerful man in this country is the prime minister, or maybe even the president. In a district, the most powerful man is maybe the district magistrate or the superintendent of police. But can you imagine that superintendent of police can do anything by his will? No, he cannot do it. Because there's a law, there's a constitution which is stopping him. And this is called as constitutionalism. That in a country, what is supreme? Constitution is supreme. Now it has two kind of meanings. When I say that if constitution is supreme, then it means that there is a limitation on the power of state. State cannot do anything that it wants. It is accountable to the people of India. किस लेवल पे accountable है? When it is making the law. तो जब भी कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट बनाती है. पार्लियामेंट कानून बना रही है, इसका मतलब है कि representatives of the people are making that law. And if representative of the people, they are making the law, it means that we, the people of India, are making the law. So any decision that is taken by the parliament is what? It has been taken on the behalf of Indian people. कोई भी कानून पास किया जाता है, इसका मतलब है कि हमने उसको कंसेंट दिया है. Since it is not possible that every time आप लोगों से जाके पूछ सकें, इसीलिए आप रेगुलर इलेक्शन करवाते हैं. After every 5 year elections happen, and then you select your representatives. आप अपने representatives को select करेंगे, and these representatives take decision on your behalf. Now, when it comes to representatives,
there are two models that we have often talked about. एक मॉडल है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को इनलाइटेंड माना जाता है, ट्रस्टी. दूसरा मॉडल है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को जस्ट स्पोक पर्सन माना जाएगा. ठीक है. जो पहला मॉडल मैंने बताया, द ट्रस्टी मॉडल, इट मींस दैट द रिप्रेजेंटेटिव इज द ट्रस्टी ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी. उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या बेस्ट है would be decided by the representative, because once you have voted him, you have given all the right of decision making on your behalf to that particular person. The other situation is that he is just the mouthpiece of the constituency. Parliament में कोई बिल आ रहा है, he is coming back to the constituency asking to the people that what should I do, and then people will tell कि आपको ऐसा करना है, and he is going to do the same thing there. Now, in which model people are more stronger, this model or this model? The second one, because यहाँ पे MP को बार बार आके पूछना पड़ रहा है, but यहाँ पे MP डिसाइड कर रहा है उसके बिहाफ. और ये जो मॉडल निकल के आता है, it comes out of an incident which happened in England. So in England you have a constituency called Bristol, जहाँ के की रिप्रेजेंटेटिव थे एडमंड बर्ग. नाउ देयर वाज अ सिचुएशन इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट द रिप्रेजेंटेटिव, दैट मींस द एमपी, वाज ऑफ द बिलीव दैट स्लेव ट्रेड इज नॉट एथिकल. स्लेव ट्रेड को क्या करना चाहिए, रोक देना चाहिए. बट द कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज मेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ स्लेव ट्रेड, दैट मींस दे वर वांटिंग द स्लेव ट्रेड. नाउ दिस सिचुएशन केम दैट वेदर द representative should listen to what his heart is saying or whether he should listen to the people. मान के चलो इंडिया में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है where the member of parliament is of the belief that non-vegetarian is something which is not ethical. मान के चलो, but the constituency is making benefit out of meat business, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा क्या बोलेगी, that you have to legalize the meat business. The representative will believe that this is not ethical. The question is किसका decision माना जाए. So if you go by the trustee model, the decision of the representative would be taken. If you go by this model, then the decision of the constituency would be accepted. Nevertheless, in both the situation, ultimately we are talking about following a particular law. Decision तो लोगों का ही उसमें बताया जाता है. So constitutionalism means that there should be limitation on the power of state. Constitutionalism means that state cannot do anything. State cannot do anything arbitrary. यदि state कोई भी काम करता है तो उसका justification देना पड़ेगा. Now, as you will read in the political science or in GS, you will read about different bodies: NHRC, CAG, UPAC, Finance Commission, National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Minorities. There are so many bodies. Now what happens is that these bodies, they give some recommendation to the government कि आप ये काम करें. And there's a provision that if government is not accepting the recommendation, then government will have to give a report that why the recommendation was not accepted. So if there's a list of 10 recommendation given by, let us say, Finance Commission, government को एक report पार्लियामेंट को देना पड़ता है जिसमें ये लिखा रहेगा कि किन किन बिंदुओं पे आपने एक्शन लिया और जिन पे एक्शन नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया. बिकॉज पीपल ऑफ इंडिया शुड नो दैट इफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिकमेंडिंग देन व्हाई दिस डिसीजन वाज नॉट टेकन. सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ultimately government looks powerful but it is not powerful because there can always be accountability towards the people, towards the constitution. This is the negative side of constitutionalism. दूसरा तरीका हो सकता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हमने देखा कि हम ये बता रहे हैं सरकार क्या नहीं कर सकती है. पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में हम बताते हैं सरकार को क्या करना है. दोनों केस में आप सरकार के जो पावर्स है उसको लिमिट कर रहे हैं. फर्स्ट केस यू आर टेलिंग कि गवर्नमेंट कैन नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. In the second case, you are telling that government has to do this. That means government की power arbitrary नहीं. अभी जो second constitutionalism है, the positive constitutionalism,
इसका एग्जाम्पल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम पढ़ते हैं डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट को कि स्टेट को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक प्रोविजन है 39B and C, in which it has been written that, I'll make you write, just I'll make you write, okay? In which it has been written that the state should make such policies so that the distribution of wealth should be uniform. और इसीलिए आपने देखा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि इंडिया में प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है कि those who are from the rich section of the society, they will be taxed at 30%, जो उनसे कम है वो 20% पे टैक्स होंगे, 10% पे टैक्स होंगे, 0% पे टैक्स होंगे। आइडिया क्या है? यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम देम एंड यू आर गिविंग टू दोज हु आर नॉट हैविंग। सो अगेन, व्हाई? Because Indian Constitution says under Article 39B and C that state will make policies for the redistribution of the income. Similarly, we have provision in the Indian Constitution which says that men and women should be given equal pay for equal work. That means यदि on the basis of gender there should not be any discrimination. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्टेट को क्या करना है। अभी आर्टिकल 44 काफी न्यूज में है, किस चीज के लिए? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके। सो इट हैज बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट शुड मेक पॉलिसीज टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज, अभी प्रेजेंटली क्या है कि क्रिमिनल लॉज जितने हैं वो सभी के लिए सेम है। दैट मीन्स if a Hindu is committing murder or a Muslim is committing murder, दोनों को सेम सजा मिलेगी। But there are certain things जो कि पर्सनल स्फेयर में आते हैं, जैसे बर्थ, डेथ, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स, एक्सेट्रा। On these matters, different religions have different provisions. तो क्रिश्चियनिटी का अलग प्रोविजन है, हिंदूज का अलग प्रोविजन है, मुस्लिम्स का अलग प्रोविजन है। So what happens is that at this point of time, the judges, the judiciary is facing a lot of problem, because the judiciary will have to consider that in such cases, in the personal sphere, it will have to consider that which religion you belong to. And then there are certain situations wherein even judiciary is not able to understand that what to do. For example, in 1995, there was a very famous case called सरला मुदगल केस। सरला मुदगल केस, इसमें हुआ यह था कि many cases came in front of Supreme Court, जहां पे हो ये रहा था कि हिंदूज for the sake of marrying, they were getting transformed into the Islam from Muslim community. तो इस्लाम कबूल कर ले रहे थे, कन्वर्जन हो जा रहा था। बिकॉज बैक देन, अभी तो ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, बैक देन इन इस्लाम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ वाज लेजिटिमाइज्ड। ओके, ट्रिपल तलाक तो अभी 2017 में खत्म हुआ है, सो इट वाज लेजिटिमाइज्ड। सो व्हाट हिंदू मेन वर डूइंग, they were not divorcing their wives, they were converting into becoming Muslim, and now they were marrying again. Now in this particular context, the court is in a fix that whether we should apply the Hindu personal law here or we should apply the Muslim personal law here, because the person has converted, but at the same time he has not given divorce to the marriage, to the earlier marriage, because according to Indian law you can marry only second time only when you have divorced your wife or the first wife, or in certain situation if you are not traceable for 7 years, because in that case from where will the person get the divorce? Otherwise you cannot marry, but it was allowed in the Muslim personal law. So such situations came, and therefore the court, the constitution was also saying that uniform civil code hona chahiye. And nowadays, since uniform civil code ko leke काफी debate चल रहा है because of the BJP government, and we are studying that. So this was the mandate given by. So constitutionalism in a nutshell means
to tell the state what cannot be done. Secondly, to tell the state what should be done. Okay. For example, reservation. Reservation is a policy under which certain seats are reserved for certain section of the society. This is reservation. Now, there's a debate on reservation also. Some people would say that reservation is actually negatively influencing the efficiency in the system, because let us say आपके पास कोई आ रहा है 100 marks लाके, कोई आ रहा है 80 marks लाके. It's quite obvious that person from 80 marks, you have all reason to believe that he will not be as efficient. But why we are doing this? Because we are achieving social justice. There have been sections in the Indian society who have been historically disadvantaged. And if they are not given some special help, then this particular difference will remain in future as well. So why reservation we are going to do? Same, 39B and C. Why? Because there should be uniform distribution of wealth. There should be some kind of arrangement wherein historically disadvantaged should also get the equal chance to participate in the development of this country. So two kind of objectives, social justice and efficiency. So constitutionalism basically means what state cannot do or what state should do. So just write. Constitutionalism can be of two types. Constitutionalism can be of two types. First point, right? Negative constitutionalism. Negative constitutionalism. Second point, positive constitutionalism. Negative constitutionalism, positive constitutionalism. Write a paragraph. The traditional idea of constitutionalism, says that there should be restrictions on the arbitrary powers of the state. Arbitrary powers of the state. On the other hand, positive constitutionalism means that the responsibilities of the state should be well defined. Right. While the former, that means negative constitutionalism, while the former creates limited state, latter creates a welfare state. Welfare state. In Indian Constitution, Part 3
Part 3 provides for negative constitutionalism, and Part 4 provides for positive constitutionalism. ठीक, Part 3 क्या है? Part 3 is that part of the constitution where the fundamental rights are given. Fundamental rights क्या है? Those rights, if violated, you can directly go to the Supreme Court. So if you see the gradation of rights in Indian Constitution, the most and the strongest rights are the fundamental rights. ये सबसे strong माने जाते हैं. They are given in Part 3 of the Indian Constitution. क्यों strong माने जाते हैं? Because of two reasons basically. First is Article 13 and the second reason is Article 32. Article 13 क्या कहता है? Article 13 says that if there is a law which has been legislated and if this law is against fundamental right, that means it is violating a fundamental right, then this law would be declared null and void. Example, fundamental right says that there should not be any discrimination on the basis of caste, या फिर there should not be any discrimination on the basis of gender. ऐसा कहता है. एक कानून में बनाती है सरकार जिसके तहत ये कहा जाता है कि women should not be allowed to go out of the home after 8 p.m. Let us say a weird law like this. Now this is one law which is differentiating on the basis of gender. That means it is violating fundamental right, and therefore this law would be challenged in the Supreme Court and Supreme Court would declare it null and void. So this is the beauty of fundamental rights. Second and the more important component is that under Article 32, any persons whose fundamental right is being violated can directly go to the Supreme Court. Imagine the highest court of the land. 31 best judges are there, and for the violation of fundamental right, individual has got this power to directly go to the Supreme Court. This is a revolutionary right. Okay. And therefore it is said that fundamental rights are the most important, the core of the Indian Constitution. It is a pillar over which Indian Constitution is actually resting. Now, outer circle to the fundamental right is constitutional right. वैसे अधिकार जो कि संविधान में तो दिए हुए हैं, but not in Part 3. Part 3 से बाहर कहीं दिए हुए. For example, Article 326 talks about the universal adult franchise. Anybody above 18 years of age has the right to vote. So this is a constitutional right. It is there in the Constitution, but not in Part 3 of the Constitution. So if it is getting violated, you cannot challenge it under Article 13. If it is getting violated, you cannot directly go to the Supreme Court. आप दूसरी जगह जा सकते हैं. You can go to High Court. आप High Court जा सकते हैं because there is another Article 226 which says that for the violation of fundamental right or any other right, you can go to the High Court. But आप Supreme Court नहीं जा सकते. So again, even if you are going to High Court, that is also a strong right, but it's not as strong as fundamental right. Okay. उसी प्रकार से we have Article 300A which provides about right to property. ठीक है, right to property की बात करते हैं, constitutional right. Now the outer layer उससे भी ज्यादा है, वो है legal rights. Legal rights are those rights which is not mentioned in the Constitution, but it has been recognized through any of the law. कोई भी कानून बना के. Example इसका है, आपने RTI का नाम सुना है? Right to information. So you have the right to information. इसका मतलब है कि आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट को आपको जवाब देना पड़ेगा. So if the information exists and if it is not prohibited, if it is not restricted for the want of security of the nation, it has to be shared with you. Now imagine such a strong act. कि earlier क्या था, इससे पहले लोग generally
या तो कोई डेलिबरेट लीक हो गया सिस्टम से तब पता चलता था, या फिर पार्लियामेंटेरियंस के थ्रू पता चलता था। आप सवाल पूछवाते थे पार्लियामेंटेरियन से कि आप ये सवाल पूछ दीजिए, सरकार जवाब दे। Now here each and every individual has got the right to ask question to the department, that आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, people are asking anything and government will have to reply that. So it is making like each and every person a जो whistleblower who is actually working for the transparency in the society. So this right is the statutory rights or the legal right, क्योंकि ये संविधान में नहीं मेंशन है, it is mentioned in a law, that is RTI Act 2005. ऑल्दो ये जो भी रिसेंट केस हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो स्टेटमेंट आया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट इट इज नॉट रिटन एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव अ डाउट? Definitely, 100% that can be done. ठीक है, so this is the legal right. Now the outer cover to this is what we call as the natural right. Natural rights वो होते हैं जो कहीं लिखा नहीं गया होता है, but it is coming out of common sense. जैसे घर में सभी को खाना मिलना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं गया है, but it is a coming out of logic. So fundamental rights are the strongest rights, and since 32 is there, 13 is there, it is restricting the power of the state. So negative constitutionalism, ये स्टेट के पावर्स को कंट्रोल कर रहा है ना। यदि आपने फंडामेंटल राइट जो पढ़ा होगा तो उसमें लेट अस से देयर इज अ प्रोविजन दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो मन में चाहे आप बोल सकते हैं, एक्सेप्शंस हैं उसमें, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग व्हाट यू वांट। यू कैन गो एंड विजिट एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, बट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि आप बिहार से हैं तो महाराष्ट्र में जाके क्यों काम कर रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र से हैं तो आप तमिलनाडु में क्यों गए हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट से दैट, गवर्नमेंट और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल भी नहीं बोल सकता। सो दीज आर द लिमिटिंग, दीज आर लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट एक्चुअली। जो दूसरा है डीपीएसपी, इट इज टेलिंग गवर्नमेंट व्हाट इज टू बी डन। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली लिमिटिंग द पावर ऑफ द स्टेट। नाउ क्वेश्चन दैट इज डिबेटेड इज कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होने के लिए डेमोक्रेसी जरूरी है? रिलेशन क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी में, क्या रिलेशन? डेमोक्रेसी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी? एक लाइन का डेफिनेशन क्या होगा डेमोक्रेसी का? रूल बाय द पीपल, बेसिकली वेयर द कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, क्या इलेक्शन बस हो जाए तो हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है? देश, अच्छा ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, तो इफ वी इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो कैन वी से दैट दिस इज डेमोक्रेसी? इससे ज्यादा डेमोक्रेसी और कुछ नहीं हो सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दिए, बट डू यू थिंक दैट दैट इज द डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव? सो दैट इज हैपनिंग इन इलेक्शंस। नो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस उन्होंने कहा कि लेटर से आफ्टर 5 years जो है इलेक्शंस हो रहे हैं, एवरी पार्टी इज बीइंग अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एंड फ्री एंड फेयर हो रहे हैं, तो जिसको भी लोगों ने सेलेक्ट किया द पर्सन इज गोइंग टू विन। So is that the democracy? Is it that the complete definition of democracy? That is not the complete. That is one part of it. और इसीलिए जो criticize करते हैं this model of democracy को, they say that it is the narrow model, wherein people are free once after 5 years. आपको एक opportunity मिल रही है 2024 में, अगली opportunity आपको कब मिलेगी? In all probability जब यदि सरकार 5 साल चलती है 2029 में, then 2034 में। बट यदि लोगों का इतना थिन कंट्रोल रहे कि 5 साल के बाद एक बार कंट्रोल मिल रहा है, दैट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अकाउंटेबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। दैट मीन्स डेमोक्रेसी मीन्स यू आर आस्किंग क्वेश्चन, यू आर एक्सरसाइजिंग योर लिबर्टी, आपको इक्वालिटी मिल रहा है, ओके, एंड यू आर होल्डिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। तो इलेक्शंस तो एक बार हो जाते हैं, ठीक है, what happens in between the elections is the real democracy. I am not happy with the system. I will come out and protest, social movement. In fact, एक बहुत बड़े लीडर हुए राम मनोहर लोहिया, okay, and he was asked, he was a socialist by
ideology, and India got independence, and he was not happy with the way government was working, and he said that I am going to start a movement against the government. People countered him. People said that if you feel that the government is not doing the right kind of work, then wait for 5 years, elections will come, you contest the election, you make a government. If people will elect you, you go and make the policies. The democracy है, free and fair elections है. And then he said that कि जो लिविंग क्राउड होता ना, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती. कंप्लेन मेरे को आज है तो क्या मैं वेट करूंगा 2029 में? नो. तो 5 years लॉन्ग टाइम. इट मीन्स दैट योर राइट टू डिसेंट जो होता है, दैट आई एम नॉट अग्रीइंग विद द गवर्नमेंट, दैट शुड बी एक्सरसाइज्ड. यदि केवल इलेक्शंस की बात करें तब तो पूरा का पूरा साउथ एशिया में इलेक्शंस हो ही रहे हैं, ठीक है. यदि हम बात करें एनी काइंड ऑफ इलेक्शंस की, तो नॉर्थ कोरिया में भी इलेक्शंस होते हैं. तो नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस जो होते हैं, दे हैपन आफ्टर एवरी 5 years, एंड द वोटर्स टर्नआउट परसेंटेज इज 99.97%. इंडिया में कितना है? 67%. 2019 में जो इंडिया में हुआ था 67% वोटर्स टर्नआउट हुआ, जो कि हाईएस्ट था अब तक का, ठीक है. एंड इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि अक्रॉस द वर्ल्ड जो ट्रेंड नीचे जा रहे हैं, इंडिया में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है. बट इमेजिन इन नॉर्थ कोरिया इट इज 99.97% एंड द इलेक्शंस आर हैपनिंग ऑन टाइम. So can you say that it is the perfect democracy? No, it is not the perfect democracy, because just elections होने से democracy नहीं आती है. That is just the one part of it. So democracy and constitutionalism basic means control on government. Now coming back to the question that what is the relation between democracy and constitutionalism? So there have been situations wherein constitutionalism existed without the existence of democracy. आप एंशियंट इंडिया में चले जाइए, ओके. द धर्म शास्त्रास, द बुक्स, दे वर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको फॉलो किया जाता था. इवन द किंग इज फॉलोइंग दैट. फॉर किंग देयर वाज व्हाट वी कॉल एज राज धर्म. सो किंग वाज आल्सो नॉट फ्री टू डू व्हाटएवर द पर्सन इज वांटिंग. नो, आपने कुछ यदि और मिथिकल ड्रामास देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें देखा होगा कि व्हेनेवर किंग इज कंफ्यूज्ड, हिज आस्किंग द पीपल कि नीति क्या कहती है, शास्त्र क्या कहते हैं. तो शास्त्र क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है. दैट मीन्स किंग इज नॉट अलाउड टू डू व्हाटएवर ही वांट. ही इज रिस्ट्रिक्टेड बाय व्हाट इज रिटन इन द शास्त्र. ओके. सो देयर डेमोक्रेसी तो नहीं थी. किंग तो डेमोक्रेसी, वो तो मोनार्की है, बट देन ऑल्सो किंग वॉज अ फॉलोअर ऑफ अ रूल. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वॉज देयर. ही इज रिस्ट्रिक्टेड बाय पर्टिकुलर थिंग. उसका एक राज धर्म है. If he is taking tax from the people, he is supposed to provide security and welfare. So in ancient India, democracy was not there, but constitutionalism was there. Come to the Mauryan times, come to the time of Ashoka. तो आपने पढ़ा होगा कि on rock edicts वो लिखवाते थे, धम्म जिसको बोला गया. That means this is something that I am going to follow, and he used to follow it. Again, that dhamm rules are what? Constitution. King following it means constitutionalism, but there is an absence of democracy. उल्टा एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया में. फॉर एग्जाम्पल व्हेन इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, जो भी हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ही हुआ ना. एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड एंड इट वाज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट दैट वाज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. द वे गवर्नमेंट बिहेव्ड, pushing all the opposition leader in jail, then restricting all kind of rights, that was definitely not constitutionalism. इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कोई सीधा संबंध नहीं है. There's no direct connect. डेमोक्रेसी के एग्जिस्ट करते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, एंड देयर कैन बी अदर सिचुएशन ऑल्सो. इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन रहे तभी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. हमने एंशिएंट इंडिया का एग्जांपल देख लिया, ठीक है. तो जस्ट राइट एन ऑब्जर्वेशन, राइट. Constitutionalism is not directly dependent on the existence of democracy.
is not directly dependent on the existence of democracy. For example, in ancient India, constitutionalism existed. Constitutionalism existed even in a monarchy. Even in a monarchy. On the other hand, in modern India, during the emergency, constitutionalism was absent. While democracy existed. Now come to the first topic, preamble, right? The preamble. Okay. Now, just look at this particular document. So, as I told, that preamble is like the first starting of the Indian Constitution, and it has been called as identity card. It has also been called as the horoscope of Indian Constitution. किसी ने इसको the most precious jewel of Indian Constitution के रूप में define किया. Different people have said different things about it. कुछ लोग बोलते हैं कि हार्ट एंड सोल भी बोल सकते हैं. हार्ट एंड सोल हालांकि ज़्यादा FR और DPSP को बोलते हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इट इज़ द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि वो क्या सोच रहे थे संविधान बनाते समय. ओके, बिकॉज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वाज इवन यूज्ड बाय द US सुप्रीम कोर्ट टू डिफाइन इट्स ओन प्रीएम्बल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. Now, if you look at this particular document, ये जो है ओरिजिनल वाला है. Okay, and here the change has been made. The constitution, the preamble was amended. Here you will not find the word secular and socialist, and here the word secular and socialist was added. Okay, this is what is existing at this point of time. Now, if you look at preamble, आप clearly इसको 4 parts में divide कर सकते हैं. Okay, the first part, and probably one of the most important part, is which is telling you that from where the power is coming. That means from where the Indian Constitution is deriving its power. So can we say that if you have got rights, as Indians we have got rights, is it right to say that government has given us the right? No. Government never gives the right. Government is responsible for protecting the rights. Government कहाँ से right देगा? Government को तो हमने select किया. Government इतना powerful कैसे हो जाएगा कि हमें right देगा? No. Government cannot give the right. Government is just here to protect our rights. We have given this power to ourselves, we the people of India. So we have created this constitution. Those who are from political science would know that एक concept आता है, social contract concept, wherein ऐसा माना जाता है कि earlier people were living in state of nature. जंगल में रह रहे थे, कोई रूल नहीं था. But then people realized that this is not the way we can move ahead. Because violence is happening in state of nature. जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मजबूत है वो रूल करेगा. But that should not be the way forward. And therefore people gathered together. उन्होंने कहा कि let us sign a social contract. Social contract क्या होगा? I am recognizing your right,
you recognize my right. एंड एक सिस्टम डेवलप करेंगे, इस सिस्टम के तहत हम आगे बढ़ेंगे. So Indian Constitution is what? It is also a social contract. So आप मान के चल सकते हैं कि 1947 से पहले we were in state of nature. हमारे पास कुछ अधिकार नहीं थे, लिबर्टी नहीं थी, ठीक है, वे पॉलिटिकल जो हमारे पावर्स नहीं थे. When we got independence, it was a moment wherein we came together. The entire Indian society came together because Constituent Assembly क्या थी? इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी. And we started deliberating upon what kind of state we are going to create. और हमने संविधान बनाया. उसी संविधान में हमने लिखा fundamental rights. So it is the people of India who have given themselves fundamental rights, not the government. Government is at best the protector of the rights. It has got the responsibility. And if the government is not doing that, judiciary will make it happen. Judiciary की responsibility है कि constitution को uphold किया जाए. इनफैक्ट यदि आप भारतीय संविधान का 3rd शेड्यूल पढ़ेंगे, 3rd शेड्यूल में दिया गया है ओथ, व्हाट ओथ इज टेकन. सो द MPs and MLAs they generally take the oath of protecting the sovereignty and integrity of India. Ministers जो होते हैं, whether at the state level or at the union level, they take the oath to not disclose any information which should be kept secret. क्योंकि आप मिनिस्टर पोजीशन में तो आपको कुछ ऐसी चीजें पता होती हैं जो बाहर नहीं जानी चाहिए. And then the oath of High Court and Supreme Court judges has been that they will uphold the Constitution. जहां भी संविधान खतरे में आएगा तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको प्रोटेक्ट करना? जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी. So if the government is not protecting your right, the judiciary will come. So the power is coming not from the government, rather it is coming from we the people of India. एक राइट का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेफिनेशन दिया है किसी ने कि राइट्स क्या है? राइट्स आर दोज पावर्स which stops you from doing something against somebody, not because that somebody is powerful, but because the entire society is powerful. Try to understand. Let us say जो person A है कोई, he is the superintendent of police of that particular district. Person B is somebody who is very weak, probably the poorest person in that particular district. ठीक है, belonging to let us say lower class, lower caste, all kind of disadvantage this person is having. He is the wealthiest and the most powerful. He wants to hit this person, but then also he cannot do it. Not because he cannot go and hit. He is physically also strong. He can go and do that. But why he is not hitting this person? Because the entire society has promised this person that if anybody is coming against you, then we are going to protect you. So it is a guarantee given by the entire society. तो वैसे ही क्या है हमारे देश में जो राइट्स दिए गए हैं, it means that the entire society will come together to protect one if he is at disadvantage. So rights are those powers which act on somebody because the entire society is powerful. So these are the concept of rights. So in the Indian Constitution's preamble, the power is coming from we the people of India, and from here comes the concept of popular sovereignty. ठीक है, sovereignty का मतलब होता है you are free to do whatever you want. Sovereignty. Before 1947 India was not a sovereign country. क्योंकि यदि कुछ भी डिसाइड करना है तो कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिश. बट आफ्टर दैट इंडिया बिकेम अ सॉवरेन कंट्री. ठीक है, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है? इंडियन पार्लियामेंट डिसाइड कर रही है. And since the power of parliament is coming from people, therefore it is called as popular sovereignty. यदि आप वेस्ट एशिया की बात करें, लेट अस से सऊदी अरेबिया की बात करें, वहां पॉपुलर सोवरेनिटी है? नहीं है. द किंग इज पावरफुल. द किंग, इलेक्शंस हो नहीं रहे, किंग इज पावरफुल. So there you don't have popular sovereignty. But in India, it is the popular sovereignty. So the first part of the preamble talks about the source of the power that is there in the Constitution. The second part is telling you about the nature of the Indian state. I will make you write, just understand. Nature of the Indian state. कि Indian state है कैसा? It is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. सो इन 5 एडजेक्टिव के साथ ये बता दिया गया है कि इंडियन स्टेट है कैसा. नाउ लेट अस से यू आर अ फॉरेनर. आप बस ये एक लाइन पढ़ लेंगे तो इतना तो आप नहीं बोल सकते कि इंडिया इज अ मोनार्की.
क्योंकि यहाँ पे रिपब्लिक शब्द लगा हुआ है, डेमोक्रेटिक शब्द लगा हुआ है। आप ये तो नहीं बोल सकते कि इंडिया इज अ मुस्लिम कंट्री, क्रिश्चियन कंट्री और हिंदू कंट्री, नो, बिकॉज सेक्युलर शब्द लगा हुआ है। आप ये तो नहीं बोलेंगे कि इंडिया इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री, बिकॉज यहाँ पे सोशलिस्ट शब्द लगा हुआ है। So these 5 terms are telling you about the nature of Indian state. So you will not required to go into the pages of the Indian Constitution. इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा state है, nature of the Indian state. Then this is telling you about the aim and objective of the Indian Constitution. Aim क्या है Indian state का? Aim है justice को लेके आना, और justice भी ये narrow concept of justice नहीं है. It is justice, social, economic, political. That is the broadest concept of justice we have talked about. Political justice तो बस इतना होता कि सबको right to vote मिल गया. But we have also mentioned about the social justice. Social justice का मतलब है that in Indian society, your caste identity will not matter. Your religion and linguistic identity will not matter. Everybody is going to be equal in the front of eyes of the law. Social justice. Economic justice means that each and every individual will have equal claim on the resource of this country. यदि आपको दिल्ली में लेटेस्ट से 100 गज की जमीन खरीदनी है, आपको यदि पैसा देना पड़ेगा तो किसी कैपिटलिस्ट को भी पैसा देना पड़ेगा. Nobody can take it for free. That means everybody, if you are taking Delhi metro और आपको 40 रुपीज किराया देना पड़ रहा है, तो even if the Prime Minister of India is going on a personal visit, he will have to buy a ticket of 40 rupees. ऐसा नहीं है कि he can use it for free. It means that सबका economic rights इस देश में बराबर है. Then liberty of thought expression, belief, faith and worship. Basically talking about the right to freedom of religion. Now in Indian Constitution, whether you are a believer or non-believer, लोग 3 प्रकार के होते हैं. एक believers होते हैं, यानी विश्वास रखते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में विश्वास रखते हैं, या तो हिंदुइज्म में, सिखिज्म में, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कोई उनका एक रिलीजन होगा. दे बिलीव दैट गॉड इज देयर एंड आई हैव सेलेक्टेड दैट दिस इज माय रिलीजन. दूसरा ग्रुप होता है जो बोलता है कि भगवान है ही नहीं, कन्विंस, एथीस्ट जिनको बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं. और तीसरा ग्रुप है जो बोलता है कि हमें पता नहीं कि भगवान है भी या नहीं. दे आर नॉट, दे आर क्लूलेस. तो फर्स्ट ग्रुप दे नो भगवान है, कौन भगवान है उनके. दूसरा जो कहते हैं भगवान है ही नहीं, अथीस्ट. और तीसरा एग्नोस्टिक्स, उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान है भी या नहीं भी है. नाउ इंडियन स्टेट ट्रीट्स ऑल दीज पीपल इन अ सिमिलर मैनर. कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है, चाहे आप भगवान में विश्वास रखें या ना रखें, चाहे किसी भी धर्म में आप विश्वास रखें. दिस इज कॉल्ड द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, अ सेक्युलर कंट्री. देन equality of status and opportunity and fraternity. Now this word fraternity is very much important in case of India. Fraternity means what? Brotherhood. ठीक है. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिकॉज इंडिया में कास्ट सिस्टम है. कास्ट सिस्टम, दैट मीन्स इन इंडिया देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज अनटचेबिलिटी. Although it is prohibited under Article 70, but in reality, even in some rural areas, it is being followed. That means you consider some people as impure. So much so that if you get in touch with those people, then we have seen that people go to, they take bath and all impure. Those people are not allowed to enter into the temple. Now, in that context, if you are bringing in the concept of fraternity, brotherhood, you can understand that how revolutionary this particular term was. अब हमारे लिए वी आर लिविंग इन अर्बन एरिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमें लगता है फ्रेटर्निटी तो क्या होता ही है, हम तो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रेटर्निटी फ्रेटर्निटी. बट ट्राई टू इमेजिन कि 1947 में कोई इस बात के लिए सोच रहा है. व्हेन अभी लगता है जेंडर जस्टिस के, बराबरी की क्या बात गई, women are equally free to do whatever they want. But imagine that France, which got its the liberal model back then in 1789, जिसको कि इंडिपेंडेंस या फिर डेमोक्रेसी 1789 में आती है, they provided universal adult franchise to women only in 1946. 1946 तक सारी महिलाओं को वोट देने का अधिकार फ्रांस में नहीं था. In America, it was as late as 1920s. In Switzerland, it was as late as 70s and 80s में जाके मिला. In fact, 1960s के आसपास में
यूएस के कुछ ऐसे राज्य थे जहां पे जो अश्वेत है, मतलब जो ब्लैक्स हैं, they were not given right to vote. Now, in this context, try to understand that India gave universal adult franchise back then in 1950, when the society is patriarchal, when the society is deeply entrenched with the caste system. And if you see in this context, then you will realize that what is the importance of this particular word fraternity. So ये बताता है क्या objectives हैं, and then some particular thing कि constitution को adopt किस दिन किया गया था. So it is mentioned that the constitution was adopted in November 1949, 26 November 1949. इस पे prelims पे question आता है, गलत हो जाता है, इस दिन adopt हो गया था वो, it came in force on 26 January 1950. ठीक है, तो just right, the preamble tells us about following things. Tells us about following things. अच्छा, preamble enforceable है? Is it enforceable? Enforceable means can you go to the court and say that this has not been done? Is it enforceable? जैसे आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जा सकते हैं ना आर्टिकल 32 के तहत. इट इज नॉट एनफोर्सेबल, इट इज नॉट एनफोर्सेबल. सिमिलरली डीपीएसपी जो हमने बात की, इट इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल. ठीक है, यदि आपको ये जानना है कि ये एनफोर्सेबल है या कोई भी प्रोविजन एनफोर्सेबल है या नहीं है, देन व्हेन वी रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता है कि इफ एनीथिंग इज एनफोर्सेबल वहां पे क्लियरली लिखा रहता है कि कैसे एनफोर्सेबल है. फॉर एग्जाम्पल, if I say that fundamental rights are enforceable, that means the part 3 of the Indian Constitution is enforceable. ये मैं तब बोल रहा हूं क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 32 makes them enforceable. 13 मैंने बताया क्या है, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. जुडिशियल रिव्यू means any law which is going against the fundamental right would be declared null and void. आर्टिकल 32 क्या था, that if your rights are being violated, you can directly go to the Supreme Court. So if there is something called fundamental right, उसके से जुड़े हुए provisions भी हैं उसको enforce करने के लिए, and that's why fundamental rights are enforceable. Enforceable का मतलब है you can go and ask the court that this is not happening. फिर मैंने बताया DPSP. DPSP is given in which part? Part 4. अभी बताया था ना, Part 4 of the Indian Constitution. I say that they are not enforceable because इस Part 4 में जो टोटल, ये सब आर्टिकल्स अभी चूंकि फर्स्ट क्लास है तो मे बी थोड़े रैंडम लगेंगे, बट इट विल कम इन सीक्वेंस. ओके, तो जो फर्स्ट Part 4 है इसमें आर्टिकल्स आपको हैं आर्टिकल 36 से 51 तक. ठीक है ना, इन दिस आर्टिकल 37 जो है वो ये कहता है that DPSPs are fundamental in the governance of the country but they are not enforceable. Clearly लिखा हुआ है उसमें आर्टिकल 37 that DPSP are not enforceable yet they are fundamental in the governance of the country. यानी क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया कि एनफोर्सेबल नहीं है. यदि हम बात करें प्रियम्बल की, प्रियम्बल में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये एनफोर्सेबल है, और ऐसे कोई प्रोविजंस भी नहीं है 13 और 32 जैसे जहां लिखा हो कि यदि इसके प्रियम्बल के खिलाफ कोई जाता है तो लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा. एंड दैट्स व्हाई इट वाज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज नॉट एनफोर्सेबल. ठीक है, ऑल्दो इट हैज बीन यूज्ड इन वेरियस जजमेंट्स, वो हम डिबेट देखेंगे. सो इट इज नॉट एनफोर्सेबल, प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल. सो जस्ट कहीं साइड में आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल. यदि कुछ इन्फोर्सेबल है तो उसको इन्फोर्स करने का प्रोविजन तो होना चाहिए ना, तो वो चीज. या ऑफ कोर्स आई थिंक जरा वो संजय कूला में एसी इन पे डायरेक्ट जा रहा है. सो राइट, टेल्स अस अबाउट द फॉलोइंग, है ना, उसमें फर्स्ट पॉइंट राइट, the source of power for the Indian Constitution. The source of power for Indian Constitution.
write in this. According to preamble, the Indian people themselves are the source of authority. This has been called as पॉपुलर सोवरेनिटी. हाँ, इसको ऑफ कर दो, चाहे तो यदि पीछे का कोई ऑन करना है तो उसको. दिस हैज बीन कॉल्ड एज पॉपुलर सोवरेनिटी. ठीक है. नाउ व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट वाज हैपनिंग, ठीक है, तो टू जस्ट गिव यू एन आइडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड विथ यूनानिमिटी. मेजॉरिटी से नहीं डिसीजंस लिए जाते थे, यूनानिमस डिसीजंस थे. नाउ व्हेन आई से यूनानिमस डिसीजंस, इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग थे सभी यस ही कहते थे. यूनानिमस मींस दैट देयर वाज अ ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड अंडर अंबेडकर. दैट ड्राफ्ट वाज, डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दैट ड्राफ्ट वाज डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. जिसको भी उससे प्रॉब्लम होता था वो कहता था ये प्रॉब्लम है और सजेशंस देते थे. And to the extent possible that was accepted, and in the end the entire constituent assembly would say that we are okay with this. So this means that unanimity से decision लिया गया. Now when this expression is being discussed, we the people of India, there were other suggestions also coming. जैसे कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस है, आई थिंक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां पे गॉड से स्टार्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया. आप मान के चलते हैं कि यू वांट टू ब्रिंग गॉड इनटू, गॉड इज द अथॉरिटी ऑफ द पावर, सो दे वांटेड टू इंक्लूड द वर्ड गॉड इनटू दिस. ओके, बट यदि आप इस शब्द का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर putting this compulsion on those also who don't believe in God, है ना. आप तो ये कह रहे हैं, जैसे कि आप let us say you are taking oath, बोलते हैं ना कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि, लेकिन यदि मैं विश्वास ही नहीं करता हूं ईश्वर में तो मैं ईश्वर की शपथ क्यों लूं? तो the argument was that you are trying to enforce this on those who don't believe on God, and you are going against the constitution itself. आप यहां पे कह रहे हैं कि एवरीबॉडी हैज लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और यहां पे आप गॉड को कंपलसरी कर रहे हैं. दैट मींस दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक. तो गॉड को हम नहीं इंक्लूड करना चाहिए. मेनी पीपल सेड दैट इट इज नॉट राइट टू पुट गॉड ऑन वोट, क्योंकि अल्टीमेटली वोटिंग से ही डिसाइड होना था. सो लेट अस नॉट यूज दिस पर्टिकुलर गॉड. एंड इंडिया बीइंग इंडिया में बहुत लोग हैं जो कि शक्ति पंथ को फॉलो करते हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तो गॉड नहीं, हम तो गॉडेज में बिलीव करते हैं. देन देयर वर सम मेंबर्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल, उन्होंने कहा तो हम तो दुर्गा माता में बिलीव करते हैं, तो दुर्गा माता का नाम लिखो यार. सो अगेन इट वाज एन ओपन एंडेड थिंग. ओके, देन पीपल वुड से इट वाज डिसाइडेड नॉट टू पुट देयर. फिर कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि लेट अस इंक्लूड द नेम ऑफ गांधी इनटू दिस, बिकॉज अल्टीमेटली गांधी वाज द टॉलेस्ट लीडर हु गॉट इंडियाज इंडिपेंडेंस. So as a matter of respect towards Gandhi, हम preamble में गांधी का नाम डालेंगे, father of the nation. But there were some Gandhians who themselves said that we will not allow this particular uses. The reason was that the Indian constitution does not reflect Gandhian principles. आप बहुत सारे ऐसे चीजों को उसमें डाल रखा है जो गांधी कभी अप्रूव नहीं करते. जैसे स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात की गई, गांधी कभी स्ट्रॉन्ग स्टेट नहीं चाहते थे, और वॉट एवर गांधी वांटेड आपने उसको डीपीएसपी में डाल दिया है, और डीपीएसपी को लिख दिया कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल. सो इफ यू इफेक्टिवली वांटेड टू इंक्लूड द प्रिंसिपल्स ऑफ गांधी एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, you could have implemented that in the enforceable part of the constitution. आप डीपीएसपी और preamble में डाल के क्या करें, and therefore we agreed that we will go with this particular expression on we the people of India. It is a very neutral concept, and this we have derived from the US constitution. US constitution का भी जो preamble है
वो वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट होता है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग हैज बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सेकेंड पॉइंट, राइट. Right. The nature of Indian state. The nature of Indian state. According to preamble, India is a sovereign country, which means that it is free to decide its internal and external policies. Its internal and external policies. जाएगा वहां पर, पहुंच पाएगा, एक्सटेंशन लाना पड़ेगा. ठीक, तो इसको बोलते हैं सॉवरेन कंट्री. नाउ यू टेल मी दैट इज इंडिया अ सॉवरेन कंट्री? यस और नो? लेकिन हमें, जैसे इंडिया इज अंडर यूएन कुछ मैंडेट देता है, उसको मानना पड़ता है. इंडिया इज अंडर, लेट अस से सार्क के अंडर में है, मानना पड़ता. इंडिया इज अंडर डब्ल्यूटीओ, बिगेस्ट एग्जांपल, डब्ल्यूटीओ के तहत है. डब्ल्यूटीओ कोई भी इंस्ट्रक्शन देता है तो हमें मानना पड़ता है. सो कैन वी से दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री? कैन वी से? व्हाई? Bigger. For the global or entire regional. That is one reason. Is basically if India is, even if let us say as a country we don't want to accept that condition, but yet we are accepting the condition given by WTO because the decision to enter WTO was ours. ठीक है, तो यदि आपने डिसाइड किया कि आपको यूपीएससी देना है तो वो डिसीजन आपका था. अब यूपीएससी के रूल के हिसाब से तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना. यू कैन नॉट से कि भाई ये हम पे हमारे इंडिपेंडेंस को खत्म कर रहा है, क्योंकि आपने ही डिसीजन लिया कि आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे. In that way, because such kind of questions are generally asked in interview. You are saying that India is a sovereign country, but India पे तो ये सारी चीजें impose की जा रही हैं. So how can you say that India is a sovereign country? So it is basically because we have decided. कोई हमें किसी ने force नहीं किया कि आप UN जाके join ही करो, WTO join. That was our own conscious decision. ठीक. Next point, right? इसी में India is a secular country. India is a secular country. It means that every individual is free to mold its relation, is free to mold, M-O-U-L-D, is free to mold its relation with God. Now, in the original preamble, this word secular was not there. Okay, it was added by which amendment in area? It was added by the 42nd Amendment. 42nd Amendment was done in 1976 by the Indira Gandhi government. The question is कि secular शब्द को बाद में ऐड करने की क्यों जरूरत पड़ी? ओके, अब एक्सप्लेनेशन, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस आर गिवन. जो पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन है जो कि सुभाष कश्यप देते हैं, the politics behind adding this word secular was that the Indira Gandhi government wanted to appear neutral. Now, during the emergency which was imposed in 1975, 26 June 1975,
and it remained till March of 1977. Now, during this time, what happened was that the family planning programs, population control program, were the main focus. And this particular program was being led by none other than Sanjay Gandhi. Now, there's no harm in implementing population control measures. Every country wants to decrease the population or optimize the population. But it was done in a very undemocratic manner. And particularly what used to happen was that the union government will give certain targets to the state government. Chief ministers को बुला के target दिया जाता था. The state governments, they will give target to the districts. तो DMs को target दिया जाता था. The DM will give target to the block development officer. That means within 1 month you have to do such and such kind of surgical operations जो करते हैं in order to control the population of the country. Okay, and it is believed, and to some extent it is true also, because many scholars have acknowledged this, that one particular community, that is the Muslim community, was targeted for this, because it was believed that the rate of growth of the Muslim community is more than the other communities, and therefore those areas were targeted. This resulted into a situation wherein the government of Congress appeared to be anti-Muslim. And the politics says that in order to compensate for that and to make the government outlook secular, a word secular was added deliberately in the Indian constitution. Okay, and then other kind of politics is there, that of course there was a rise of the Jan Sangh and all, and and Jan Sangh was a party, the Bharatiya Janata Party, which was oriented towards the Hindu interest, and therefore in order to actually control that, the word secular was added. Okay, and that's why it is said that secular word को तो बाद में political reasons के साथ जोड़ा गया है, तो let us remove this word secular from Indian constitution. So currently a petition is pending before the Supreme Court, जहाँ पे ये कहा गया है कि the word socialist and secular should be removed from preamble, because if Constituent Assembly after discussing decided not to add this, then why for political reason the Congress government added? तो इसको करते हैं, क्या करते हैं, अब इसको हटा देते हैं. Supreme Court is just trying to understand that whether this can be done or not. Okay, now you can analyze this by connecting it to basic structure. Now just to give you brief idea, the basic structure doctrine came in which case? तो एक केस हुआ केशवानंद भारती केस 1973. Judgment came on 24th April 1973. ठीक है. In this particular judgment, the Supreme Court said that in Constitution, certain components are basic in nature and that cannot be changed. हमने अभी देखा कि Article 368 जो है, Article 368 talks about amending the Constitution. That means making changes in the Constitution. तो यदि आप चेंज करने जा रहे हैं तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स हो सकता है मैं सेक्युलर कंट्री हटा के, सेक्युलर शब्द हटा के मैं एक रिलीजन का नाम वहां पे लिख दूं, या फिर वहां पे डेमोक्रेटिक शब्द हटा के मैं मोनार्की लिख दूं वहां पे. तो चेंज कैन हैपन, कहीं भी चेंज किया जा सकता है. एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड दैट यू कैन मेक चेंजेस ओनली इन दोज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नॉट बेसिक. दैट मीन्स जो अमेंडमेंट आप कर रहे हैं, that amendment should not be going against the basic structure of Indian Constitution. What is basic structure? Let us say कि आप यहाँ पे रह रहे हैं ORN में, आपको 3 BHK फ्लैट दिया है ओनर ने. आप पर्दे चेंज करा सकते हैं, पेंटिंग चेंज करा सकते हैं, वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 3 BHK को तोड़ के आप 1 BHK बना दें, बिकॉज दैट विल चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लैट. ठीक है, वो 3 BHK से 1 BHK बन गया. यू कैन नॉट मेक दैट चेंज. Similarly, in Indian Constitution, you can change whatever you want, but don't change the basic nature. ये Supreme Court ने कहा. Now, Supreme Court also declared that preamble is basic structure. Preamble is basic structure. ये केस जजमेंट कब आता है? 1973 में. 1973 में आ रहा है. और ये जो चेंज किया गया, this change, adding the secular word, that was done in 1976.
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया है 73 में ही, है ना, और इसमें कहा गया है कि प्रियम्बल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें बदलाव आप नहीं कर सकते, और यहां पे बदलाव कर दिया गया. सो व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट रिमेन साइलेंट ऑन दिस? बेसिक स्ट्रक्चर बदल रहा है ना यहाँ पे, और ये चीज कह दी गई है, तो व्हाई सुप्रीम कोर्ट रिमेन साइलेंट? इट वाज बिकॉज जो चेंज किए गए दैट वाज नॉट गोइंग अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट वाज गोइंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर. तो यहां सेक्युलर शब्द ऐड ही किया गया है ना, ऐसा तो है नहीं कोई रिलीजन का नाम ऐड कर दिया गया या फिर कह दिया गया कि आज के बाद ये मुस्लिम राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा. वो होता देन इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस चेंज इज गोइंग with the basic structure and therefore Supreme Court said that it is okay. What is basic structure? Definition is the most important part of the Indian Constitution, and what that would be, it would be decided by the Supreme Court. So in various judgments Supreme Court has decided, for example preamble को basic structure का part बताया गया. Then free and fair elections were declared as basic structure. There was a very famous case, Indira Gandhi versus Raj Narayan, 1975. Free and fair elections को basic structure बताया गया. Independence of the judiciary को basic structure बताया गया है. Okay, so these are different components that Supreme Court has recognized in many cases, and still it is in the process of recognizing it. So there's a list which has been derived from different judgments, और वो फिक्स नहीं है, वो बढ़ भी सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है. Okay, so this is about adding the word secular. So India is a secular country at this point here. So that is exactly this was the argument. Exactly this was the argument, that if you are not ready to believe that, if you are not ready to believe that India is a secular country after looking into the provision, then just by adding the word secular will the Indian Constitution become secular? No. So if you look into the provisions of Indian Constitution, then we have Article 25 to 28. 25 to 28 gives you freedom of religion. That means you are free to select whatever religion you want. You are free to manage your own religious affair. पूजा पाठ आपको कैसे करना है. You are free to conduct. That means nobody can force. Even if you're from the, let us say, Hindu community, nobody can force you to follow Hinduism. You are completely free. So we have Article 25 to 28. We have Article 29 and 30, which provides for special rights for minorities. And this was exactly the argument, that if by looking at this one cannot believe that Indian Constitution is a secular constitution, then just by adding the word secular in the preamble, it makes no sense. And there were resistance. There were few people, especially people from the right-wing group, they were resisting that particular change. Then let us not add the word secular in the Indian Constitution. ठीक है. So secular का आपने लिख लिया. आपने क्या लिखा secular में? Okay, fine. It was added by 42nd amendment. It was added by 42nd amendment. In 1994, इसी में कंटिन्यू करना है. In 1994, in Supreme Court judgment, in Supreme Court judgment in S.R. Bommai case, S.R. Bommai case, secularism was declared as the basic structure. Secularism was declared as the basic structure. Next point, right? Indian state
is a socialist state. Socialist state. Now, what is the meaning of socialism? Socialism को, what is the opposite of socialism, if at all I can ask? Socialism के opposite का system? Capitalism. ठीक है. And in one line, if you have to understand, capitalism prefers individual over group. Socialism prefers group over individual. This is the basic model. Of course, बहुत तरह के socialism होते हैं. That is a different scope altogether. But socialism का मतलब है कि यदि आप capitalist model से चल रहे हैं, तो capitalist का model का मतलब है कि यदि 1000 rupees हैं, तो this would be given to the most meritorious person. 1000 rupees जो जितना मेहनत करे इसको ले जाए. But if it is a socialist model, then this 1000 rupees would be distributed amongst different players so that everybody has something. इसमें क्या हो रहा है, हो सकता है एक ही इंसान के पास बहुत ज्यादा और दूसरे के पास हो ही ना. तो कैपिटलिस्ट मॉडल जो होता है वो इगैलिटेरियन मॉडल नहीं होता है. जैसे यूएस मॉडल या फिर कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर नॉट सोशलिस्ट इन दैट सेंस. यूएस को देख लो तो बिजनेसेस प्रॉफिट है. दिस पर्टिकुलर, इसके फॉर कैपिटलिज्म द मेन आइडिया इज प्रॉफिट मेकिंग. एनीथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू मोर प्रॉफिट इज जस्टिफाइड. बेंथम का एक कॉन्सेप्ट है यूटिलिटेरियनिज्म का. दैट मीन्स एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, इट इज वर्थ डूइंग इट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आप कोई भी डिसीजन लेते हैं लाइफ में, ओके, तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. या तो यू लुक एट द प्योरिटी ऑफ मीन्स, जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता सही है या नहीं, या फिर प्योरिटी ऑफ, दैट मीन्स यू लुकिंग एट द रिजल्ट, कि चाहे हम रास्ता ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट रास्ता लें, रिजल्ट क्या मिलने वाला है. तो बेसिकली व्हाट इज गोइंग टू मेक यू हैप्पी. तो यूटिलिटेरियनिज्म मीन्स वॉट एवर गिव्स यू प्लेजर, हैप्पीनेस is justified, and whatever gives you pain is not justified. In that sense, जैसे कि इंडियन ट्रेडिशन में हम उल्टा फॉलो करते हैं. वेस्ट में you will find that life is worth enjoying, so you eat today, sing and dance, drink and dance. But in India we see कि हम यहाँ पे कष्ट सहेंगे तो हमारा अगला जन्म सुधर जाएगा, है ना. So we believe in giving pain to our body, इसीलिए हम व्रत करते हैं, ऑल दैट थिंग. वेस्ट इसमें नहीं बिलीव करता. वेस्ट बिलीव्स इन द फैक्ट दैट लाइफ इज वर्थ एंजॉयिंग. व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस, दैट इज जस्टिफाइड. तो दिस इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट. तो सोशलिज्म मीन्स प्रेफरिंग ग्रुप ओवर इंडिविजुअल. दैट मीन्स यदि 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो कैपिटलिज्म कहेगा कि उस 100 में से 10 के पास BMW रहे, 90 के पास कुछ ना रहे. लेकिन सोशलिज्म कहेगा कि 100 लोग हैं तो सभी के पास कम से कम एक मारुति ऑल्टो होनी चाहिए. देयर शुड बी सम बेसिक थिंग टू एवरीबॉडी. दैट मीन्स एवरीबॉडी शुड बी समवॉट हैप्पी. एग्जांपल सोशलिस्ट मॉडल का सोवियत यूनियन जो पहले था, चाइना, दे वर द एग्जांपल. इंडिया भी सोशलिज्म के साथ ही ग्रो करता है. नाउ whether to add the word socialism in the Indian preamble or not, it was discussed in the assembly, and the assembly decided that we are not going to add it. Reason ये था कि सोशलिस्ट वर्ड जब ऐड करते हैं, सोशलिज्म, इट इज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, एंड इट वाज सेड दैट मे बी इन टाइम टू कम द जनरेशंस विल प्रेफर कैपिटलिज्म मोर देन सोशलिज्म. तो व्हाई शुड बी बाउंड देम, यहां से क्यों हम बांध लें उन चीजों को. व्हाई शुड इट बी नेसेसरी टू फॉलो सोशलिज्म ओनली. हम कैपिटलिज्म भी फॉलो कर सकते. यूएस कैपिटलिज्म फॉलो करता है. इट इज the richest and the most powerful state of the world. तो हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रेफरेंस जो है वो कैपिटलिज्म रहे, इसीलिए हम सोशलिज्म शब्द को हमें नहीं ऐड करना चाहिए. एंड इट वाज नॉट एडेड. अगेन इट वाज एडेड, सोशलिज्म वाज एडेड ओनली बाय द 42nd अमेंडमेंट बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. इट वाज एडेड इन 1976. व्हाई इट वाज एडेड? बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट was focusing on making government look closer to the poor people. आपने एक स्लोगन पढ़ा होगा, गरीबी हटाओ. So in 1971 elections, when Indira Gandhi is going to contest the elections, is giving the slogan of garibi hatao, and she took many steps which made people realize that this government is closer to the poor people. जैसे
बैंक्स नेशनलाइजेशन, जो 14 टॉप प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया. दैट मीन्स गवर्नमेंट टुक देम अंडर इट्स कंट्रोल. देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज प्रीवी पर्स. तो जब भारत को आज़ादी मिली तो जो प्रिंसली स्टेट्स आए उनके लिए कुछ एनुअल पेंशन देने की बात हुई. एंड दिस पेंशन रेंज बिटवीन 5,000 rupees per annum to even lakhs of rupees per annum. But Indira Gandhi decided that we are not going to give this in future. So many decisions that she took that was closer to the people. Many land reforms act she brought. And this was one step. She wanted the government to appear closer to the people, and therefore deliberately the word socialist was added. And that's why it is now being said that let us remove the word socialism. Because after 1991 में हमने क्या किया? Liberalization of Indian economy. We are moving towards the capitalist model. And therefore, in fact, question भी UPSC में पूछ चुका है कि do you think that in the present context, especially after 1991 reforms, is it right to say that India follows the socialist model? क्योंकि हम तो capitalism की तरफ बढ़ गए. So it was the political reason, that's why it was added. So just write, declares as a socialist state, right? The word socialist was added by 42nd Amendment. The word socialist was added by 42nd Amendment. Right. Next point. India is a democratic republic. India is a democratic republic. It means that the head of Indian state is elected. Okay. Now if you look into the word republic, it means that the head of the Indian state should be elected. Now here also there are two meanings of the word republic. The narrow meaning is that the head of the Indian state should be elected. That means president. Head of the Indian state कौन है? President. India, UK में head of the state कौन है? Queen or the king. Okay, the monarch. He or she is the head of the state. क्या UK में head of the state elected है? नहीं है. वो तो ट्रेडिशनल वो फैमिली बेसिस पे चलता है. इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट है क्या वो इलेक्टेड है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनडायरेक्ट बट इलेक्टेड तो है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिपब्लिक. हेड ऑफ द स्टेट शुड बी इलेक्टेड. डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन. नाउ present time in which we are living is very interesting time, and the best example of the power of the constitution. The head of the Indian state is a woman. She is from tribal community. She is elected. Okay, had this constitution not been there, do you think that it would have been possible? No. एक ऐसे सोसाइटी में जहां पे गांव का मुखिया लोअर कास्ट का इंसान नहीं बन सकता, ठीक है, a woman cannot become the head of that particular village. How could you have imagined that a woman from the tribal community will become the head of the entire country? Okay, this has been possible because of the Indian Constitution, and that's why Indian Constitution has been called as a social document. एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफी अच्छे से पढ़ा और डिफाइन किया है, ग्रैनविल ऑस्टन. उनकी किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, cornerstone of a nation. He has mentioned that Indian Constitution is a social document. The present Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, he has said that Indian Constitution is a feminist document. That means it is not only providing just the equality to women, it is also providing positive discrimination. Equality देना भी एक revolutionary बात थी उस समय कि आप बराबरी, आप महिलाओं और पुरुषों को एक बराबर पे देख रहे हैं. And in that context पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है. आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 सेज दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स.
There should not be any discrimination on the basis of sex, caste, जो है religion, उसमें कोई discrimination नहीं, place of birth. But Article 15 Clause 3 says that there can be special provision for women. Okay. In Indian Constitution, we have done 73rd and 74th Amendment. 73rd Amendment पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है. 74th अमेंडमेंट जो है वो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है. अंडर दिस देयर इज एन आर्टिकल 243D and 243E which provide for 1/3, not less than 1/3 reservation for women at this level. Not less than 1/3, यानी इससे ज्यादा हो सकता है. And there are many states who have given 50% reservation to women at panchayat and municipality level. That means Indian Constitution is indeed a feminist document. And recently, last year, the 106th Amendment provided for 1/3 reservation at state and union legislature level. And therefore, the Indian Constitution is a truly feminist document. So it is a democratic republic. You cannot discriminate on the basis of this particular thing. And this is what Dr. Ambedkar argued in the Constituent Assembly. He said that the word republic has got more meaning in Indian context because the society is ridden with the caste system. So here what republic means is it is an attack on the caste system. जो कि Mahatma Phule कहते थे that Indian society can only grow if the caste system is ended. And this is the example of this. So Indian Republic. Now next point, right? Democratic Republic आपने लिखा. Next, right? The preamble indicates the objectives of Indian state. It talks about substantive concept of justice. It talks about the substantive concept of justice. That is social, economic and political justice. That is social, economic and political justice. Now justice जो कॉन्सेप्ट है उसके ब्रॉडली 2 मीनिंग्स हो सकते हैं. ओके. One is the narrow concept of justice or what we call as the procedural justice. ठीक है, procedural justice होता है. Now procedural justice means that you are making the process equal for everybody. For example, I, as the government of this region, I told that anybody who is coming to the government hospital would be given quality and free health care. Procedural justice, सबके लिए process same है. But there may be certain people who cannot reach to the government hospital because उनके पास अपने vehicle नहीं है या फिर they are physically disabled. Now, if I am thinking from that, तो यदि ये situation है, तो despite the fact कि I have made the process equal for everybody, objective मेरा अचीव नहीं हो रहा है. मैंने process सबके लिए बराबर क्यों बनाया? क्योंकि मेरा objective था that nobody should remain out of the health care net. सभी healthy, fit and fine रहे. This was my objective. And therefore I said that from now onwards, whichever hospital you go, the hospital is not going to take money from you. Objective था कि सभी स्वस्थ रहें. लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कुछ लोग होंगे जो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे. So my objective is still not achieved. But when I add extra provision that those who cannot afford transportation, to them I will also provide transportation. Now everybody can reach the hospital. That means now my objective has been solved. Now सबको equal care मिल रहा है. Another example, education में.
मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में एडमिशन के लिए एक एग्जाम बनाया जाएगा, यूपीएससी. एवरीबडी, नोबडी वुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम राइटिंग दैट एग्जामिनेशन. जो है जहां से है इंडिया में, उस एग्जाम को लेके सबके लिए एक पेपर बनाए जाएंगे और उसके बाद सिलेक्शन दिया जाएगा. नाउ आई लुक दैट आई हैव डन जस्टिस, क्योंकि हमने सबके लिए समान प्रक्रिया कर दिया. ऐसा नहीं कहा कि कोई लोअर कास्ट है तो एग्जाम ही नहीं देगा, या फिर कोई वुमेन है तो एग्जाम ही नहीं देगी. आफ्टर दैट प्रोसेस इज सेम फॉर एवरीबडी. बट what about those जिन्होंने बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, उनका वो लेवल है ही नहीं. क्योंकि जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बचपन से दिल्ली में रह के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए. देयर आर सर्टेन पीपल हु हैव रेड इन गवर्नमेंट स्कूल मे बी वेयर द टीचर वाज इवन नॉट कमिंग. So can we say that all of them are at equal position? No, not all of them are. So on the basis of that, if I provide for reservation system, कि किसी के लिए कट ऑफ 100 है तो किसी के लिए 90 होगा, किसी के लिए 80 होगा, that means at the end of the day there will be some kind of uniformity. So the earlier example जो है वो procedural justice का है, जब मैंने process बराबर किया. The later example is of substantive justice, where I have made the outcome equal for everybody. Outcome जो है सबके लिए equal है. Procedural justice का another example है, let us say in this class there are 50 students. ठीक है. Now एक रूल मैं ये बनाऊंगा कि मैं सभी स्टूडेंट्स को I'll distribute, let us say 2 समोसा सबको दे दिया. 50 स्टूडेंट 100 समोसा, सबको 2-2 मिले. हमें लगा कि हमने तो जस्टिस कर दिया. बट हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक भी ना खाएं, और कुछ लोग होंगे 2 खाने के बाद भी लग रहा है कि भी कुछ हुआ ही नहीं. तो जस्टिस तो नहीं हो पाया ना. मेरा एम क्या था? एम था कि उनका पेट भर जाना चाहिए. सो व्हेन आई टेक इनटू कंसिडरेशन दिस फैक्ट एंड सप्लाई मोर टू देम हु वांट मोर एंड लेस टू देम हु वांट लेस, देन दैट बिकम्स अ सब्सटेंटिव जस्टिस. प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट सब्सटेंटिव जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे हम सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करें. हो सकता है केवल पॉलिटिकल जस्टिस मेंशन करके छोड़ देते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता है ये बात कि इंडियन सोसाइटी में प्रोसीजरल जस्टिस इज गोइंग टू फेल. प्रोसीजरल जस्टिस वहीं सक्सेस होगा जहां पे सोसाइटी में इक्वालिटी एक लेवल पे है. यदि सभी मान के चलो 10th भी पढ़े हैं तो मान सकते हैं कि सोसाइटी बराबर है. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वर इलिटरेट एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर साइंटिस्ट्स, so of course it will not happen. There are certain people who have so much in excess, and there are certain people who are dying without of the lack of food, for lack of food. So the constitution makers provided for a very comprehensive and substantive concept of justice. तो लिखा आपने social, economic and political justice. Kindly tell me the line, जो last line आपने लिखा. Political justice, right? Social justice means that there should not be any discrimination, on the basis of social identities like religion, caste, ethnicity, etc. On the contrary, historical disadvantage can be used for positive discrimination. ठीक है. और इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत इंडिया में जो सोशल एंगेजमेंट है, इट हैज कम अ फुल सर्कल, बिकॉज बिफोर 1950, बिफोर द कमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द सेम आइडेंटिटी which was being used to exploit people, caste, the same identity has been used after the making of the constitution to empower the people.
यानी हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आपका अपना लोअर कास्ट का होना लगता होगा कि वाई आई एम फ्रॉम दिस कास्ट, बट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, लेट अस से आफ्टर रिजर्वेशन वॉज गिवन, नाउ द सेम आइडेंटिटी इज एम्पावरिंग यू, आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड दैट देयर इज अ रेस टू द बॉटम. डिफरेंट कम्युनिटीज आर प्रोटेस्टिंग कि नहीं, हम पिछड़े जाति से, हम पिछड़े जाति से. Why? Because you are getting the benefit here, and in India reservation is the strongest kind of affirmative action. आप schools बनवा दें, college बनवा दें, infrastructure बनवा दें, maybe people are not going to value it more, provided यदि आप 5% reservation दे दें उस community को, people are happy. So anyway, this particular identity, caste identity, has brought the social engagement in India to a full circle, which was being used to exploit is now being used to empower. Again, why? Because preamble talks about social justice. इसमें आगे लाइन लिखेंगे. Economic justice means that each individual has equal claim. Economic justice means that each individual has equal claim on the resources of the country, on the resources of the country. Political justice refers to the concept of non-discrimination, and equal political opportunities. Equal political opportunities. In bracket, write universal adult franchise. Universal adult franchise. Next point in this, right? Preamble talks about liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. बेसिकली वो सेक्युलरिज्म में जो बात की वही है. नेक्स्ट पॉइंट, राइट. Preamble also mentions equality and fraternity. As the objective of Indian state. The objective of Indian state. The use of term fraternity is particularly important because the Indian society was characterized by patriarchy and caste system. Next point, right? The preamble mentions the date of adoption
the date of adoption of Indian Constitution as 26 November 1949. 1949 ये क्वेश्चन देखो, आर यू एबल टू सी इट? दिख रहा है? What should be the right answer? B. 26 day of November 1914. ये सब फालतू में इतना दे रखा है, यहीं से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. 26. See this? टेल मी ABCD में बोलो, ऐसे बोलो. ABCD में बोलो. Which one? D. B for Bombay. ठीक है. Anything else? Economic justice as one of the objective of the Indian Constitution has been provided in the preamble and fundamental rights. No. The preamble and the directive principles, the fundamental rights and directive principles, and none of the above. B is the right answer. Economic justice जो है वो बात की गई है preamble में and then DPSP. B and C. 39 B and C. I was just going to B है ना, इकोनॉमिक लिबर्टी में बात में. लुक एट दिस. A preamble. ठीक है. It is because it was mentioned in one of the judgments also. तो बेरुबारी केस में इसको मेंशन भी किया गया था. This is the preamble of the United States, we the people of India, जो मैंने बताया एक्सप्रेशन हमने वहां से लिया था. Look at this. I think this question came in 2022 only. D. A. D. एक कितने लोग बोले A? कोई तो बोला A. D. We are going for D. So D is the right answer. The preamble to the Constitution of India is a part of the Constitution but no legal effect. So it is part and it has a legal effect also. So इतना डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. Not a part of the Constitution. ये तो गलत हुआ. A part of the Constitution and has the same legal effect as any other part. So this is also not right. So if you will see the fourth option, a part of the Indian Constitution, yes, but has no legal effect independently of the other parts. क्योंकि हमने देखा कि in preamble there is no provision mentioned जिसमें clearly लिखा हो कि it is enforceable, but Supreme Court uses the preamble to justify its decision. So if there is some kind of dependency, then it can be used. Look at this. अरे तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? चलो कोई नहीं. Now just write debates related to preamble. Debates related to preamble. Debates related to preamble.
तो प्रियम्बल से जुड़े 3 क्वेश्चन थे बेसिकली. फर्स्ट, that whether preamble can be used to interpret the constitution. Okay, क्योंकि नॉन इन्फोर्सेबल था. Second question was that is preamble the part of Indian constitution, and the third question was that can preamble be amended. Okay, now if you see these milestone judgments, A.K. Gopalan happened in 1950, Behru happened in 1960, and Keshwanand Bharti case happened in 1973. और इन 3 मेजर केसेस से ये तीनों क्वेश्चन डिसाइड होते हैं. नाउ एज यू विल सी देयर इज अ सम काइंड ऑफ ट्रेंड दैट द सुप्रीम कोर्ट इज फॉलोइंग. ठीक है. नाउ व्हेनेवर अ क्वेश्चन कम्स बिफोर सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऑप्शन रहते हैं. आइदर टू गो इनटू द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शब्दों में जाके, और यू गो इनटू द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. Now, when you are going into the text of the constitution, you are going for what we call as literal interpretation. And when you are going for the context or the intention, then you are going for the liberal interpretation. ठीक है. अब ये ट्रेंड आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा. An example, A.K. गोपालन केस में क्वेश्चन था आर्टिकल 21 को लेके. आर्टिकल 21 किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 says that every individual has the fundamental right to life and personal liberty. Okay, it means that your fundamental right to life and personal liberty cannot be taken away except by procedure established by law. ये शब्द इंपॉर्टेंट है, procedure established by law. लॉ जैसे कहता है उसी हिसाब से आपको चलना है. It also means that if there is a law which provides for taking away your life and liberty, then judiciary will have no problem. लॉ के तहत आपकी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है कि द फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ कैनॉट बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. इसका मतलब है कि यदि लॉ में लिखा गया है तो योर लिबर्टी एंड लाइफ, राइट ऑफ लाइफ कैन बी टेकन अवे. This question was asked by the Supreme Court in A.K. Gopalan case कि सरकार ने क्या किया, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून बनाया. प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है जब आपको क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाएगा, थिंकिंग कि हो सकता है आप फ्यूचर में कुछ गड़बड़ करने वाले हो. तो जनरली यू विल फाइंड कि ऑन द ऑर्डर्स ऑफ मैजिस्ट्रेट इलेक्शन से पहले कुछ लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, बिलीविंग दैट दे मे क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग इलेक्शंस. तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, पहले अभी कुछ हुआ नहीं, in order to prevent anything which happens, you are arrested. So he was put behind bars for preventive detention law, and then he approached the Supreme Court saying that my right to life, fundamental right to life and personal liberty is under threat because I am being put into the jail. Now Supreme Court opened Article 21 and it read that nobody, the fundamental right to life and personal liberty cannot be restricted except for procedures established by law. और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे तो लॉ है एंड देयरफॉर सरकार कुछ गलत नहीं कर रही है. ठीक है. नाउ कम टू अ डिफरेंट केस व्हिच हैपेंड इन 1978, a very famous case called as the Menka Gandhi case. So after emergency, when the Janata Party is coming to power in 1977, the opposition party, ठीक है, 1977 तक कोई भी नॉन कांग्रेस पार्टी सरकार में नहीं आई थी. When Janata Party is coming to power, then the passport of Menka Gandhi is being taken away. That means she cannot leave the country. Now she is approaching the Supreme Court saying that my personal liberty is being threatened, and Article 21 provides me with what? The right to life and personal liberty. Now the same question is here also, Article 21, and what is happening is under a particular law. But here the Supreme Court is saying, Supreme Court is going into the liberal interpretation, and Supreme Court is saying that for Article 21 due process of law will apply. अब ये जो 2 शब्द है ना, procedure established by law and due process of law, these are 2 very different concepts. The procedure established by law and due process of law, ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि लॉ इज इंपॉर्टेंट,
प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ कुछ भी कहेगा वो करना पड़ेगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। दिस इज सेइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट मीन्स लॉ इज देयर, लॉ इज इंपॉर्टेंट, बट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो लॉ क्या अचीव करना चाहता था, एंड इफ दैट ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अचीव्ड बाय गोइंग समवेयर साइडवेज टू द लॉज, आप जा सकते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो भी उचित मार्ग होगा उस लॉ को फॉलो करने के लिए उसको फॉलो किया जाएगा। दैट मीन्स दिस इज टॉकिंग अबाउट प्रोसीजरल जस्टिस, हमने प्रोसेस सबके लिए बराबर कर दिया। दिस इज टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कॉल एज द नेचुरल जस्टिस और सब्सटैंटिव जस्टिस, नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि देयर इज अ लॉ दैट इन अ बैंक, or let us say in this institute, the law is that when you come to take admission, everybody will have to stand in line. This is the law. So if I go for procedure established by law, मैं कहूंगा कि सभी को लाइन में खड़े रहना है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये मतलब होगा कि if there is somebody who's weak, ओल्ड एज का है, सब प्रेग्नेंट वुमन इज देयर, तो व्हाट आई वुड से कि आप बैठ जाइए, बाकी लाइन में खड़े रहेंगे, या फिर मैं उनको एक छोटी सी आई विल नो मेक हर टेक एडमिशन बिफोर एंड देन गो। व्हाई? बिकॉज जस्टिस, नेचुरल जस्टिस लग रहा है। सो फॉर दिस आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट ड्यू प्रोसेस लॉ अप्लाइज। दिस हैपेंस व्हेन यू गो फॉर लिबरल इंटरप्रिटेशन, दिस हैपेंस व्हेन यू गो फॉर लिटरल इंटरप्रिटेशन, जब शब्दों से आप आगे बढ़ते ही नहीं है। Now, very recent case which came, not very recent, but in 2021, अभी मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा चल रहा है, ठीक है। Before 2021, reservation was given to Maratha community by the Maharashtra government. मराठा कम्युनिटी जो है महाराष्ट्र में, तो the reservation was given to the Maratha community in Maharashtra. Okay. This was challenged. This reached Supreme Court. Supreme Court said that we are having two issues with this decision of the government. Two problems. पहला problem क्या है कि after giving the reservation to Marathas, the total reservation is breaching 50%. जबकि एक बहुत ही फेमस केस हुआ है 1992 में, जिसको कहा जाता है इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी केस, वेयर द सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ओनली द रिजर्वेशन शुड ब्रीच 50%। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस क्यों कहा गया? बिकॉज वेन एवर यू आर एम्प्लॉइंग समबडी, आपके दोनों ऑब्जेक्टिव होते हैं, एफिशिएंसी एंड सोशल जस्टिस। एफिशिएंसी आती है नॉन रिजर्व सीट से, सोशल जस्टिस आता है रिजर्व सीट से। तो सुप्रीम कोर्ट बिलीव दैट यदि सोशल जस्टिस मेजॉरिटी हो जाए तो दोज हु आर वर्किंग हार्ड उनके लिए इंसेंटिव नहीं रह जाएगा। तो देयर शुड बी अ 50-50 रेशियो होना चाहिए, एंड देयरफॉर ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस दिस शुड बी ब्रीच्ड। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठास की जो सिचुएशन है वो इतनी बुरी नहीं है कि उसके लिए 50% लिमिट को ब्रीच किया जाए। दिस वन पार्ट ऑफ। The second problem that the Supreme Court had was that Supreme Court observed one thing, कि Maharashtra government or any state government has no power to recognize the backward classes. देखिए, आप रिजर्वेशन जब भी देते हैं, रिजर्वेशन किन, there are 4 group of people जिनको रिजर्वेशन इंडिया में मिला है ना। एक तो शेड्यूल कास्ट है जिनको रिजर्वेशन मिला है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है जिसको कि बोलचाल की भाषा में ओबीसी ग्रुप बोलते हैं। नाउ यू हैव द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ये रिजर्वेशन है। इन सबको क्लब करने के बाद हमें 59% रिजर्वेशन हुआ है। शेड्यूल कास्ट का जो रिकॉग्निशन होता है दैट इज डन बाय प्रेसिडेंट एंड द लिस्ट इज मॉडिफाइड बाय पार्लियामेंट। व्हाई? Because Article 341 says so. Scheduled tribe list is prepared by President, modified by Parliament. Why? Because Article 342 says so. Socially and educationally backward classes, OBCs. At that point of time, 2021 में जब ये decision चल रहा था, the list was to be prepared by President and was to be modified by Parliament. Why?
because Article 342 Clause A says this. ठीक है, अभी ईडब्ल्यूएस छोड़ देते हैं. ये क्यों हुआ? क्योंकि 340 एक अमेंडमेंट किया गया था, 102nd अमेंडमेंट, 102nd अमेंडमेंट, जिससे के तहत 342 को ही रेप्लिकेट कर दिया गया एंड द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स चला गया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो इफ यू लुक एट आर्टिकल 342A देन उसमें स्टेट के पावर की बात ही नहीं की गई थी. उसमें बस ये लिखा गया था जो आर्टिकल 342A है जिसके तहत हम ओबीसीज की पहचान करते हैं, उसमें बस एक चीज लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइजेस, पार्लियामेंट मॉडिफाइज. ओके, नाउ द जज इज सेइंग कि इसमें स्टेट का नाम ही नहीं लिखा है, तो स्टेट ने रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया? यहां तो लिखा है प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइजेस, पार्लियामेंट मॉडिफाइज. तो इफ स्टेट का नाम ही नहीं लिखा है तो स्टेट ने रिकॉग्नाइज कैसे कर लिया कि मराठास आर बैकवर्ड? फॉरगेट अबाउट 10% रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. How at first place, how Marathas were recognized as the backward class? The judge questioned itself. Now the Attorney General of India said that it was not our intention, okay, and we are ready to give in writing that even states can, they can adopt. But the judge said, though, I will look into what is written in the Constitution, not undertaking that you are giving. And therefore, immediately 105th Amendment was done. और इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसमें लिख दिया गया कि स्टेट्स कैन, बस इतना लिख दिया गया, स्टेट्स कैन सेपरेटली प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट. नाउ द जज सेड नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एक्सप्लिसिटली लिख गया. व्हाई? बिकॉज दे आर लुकिंग एट द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर नॉट लुकिंग एट इंटेंशन. ओके, जस्ट 2 minutes. So coming to this particular coming to this particular tally, here the judge is going into literal interpretation, here it is going into liberal interpretation. First question, is preamble a part of Indian Constitution? In this A.K. Gopalan case, the judge is looking into the pages और उसे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं है it is a part, it is not the part of Indian Constitution. Sorry, the first question was with respect to interpretation. So it is saying that it cannot be used for the interpretation of the Constitution because it is not enforceable. Okay. In this case, Berubari case, the judge said that only in exceptional circumstances it can be used for interpreting the Constitution. And finally, in Keshwanand Bharti case, the judge said, the Supreme Court said that it should be used for interpreting the Constitution. Cannot be used, can be used, should be used. Why? लिटरल इंटरप्रिटेशन से हम लिबरल इंटरप्रिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं. आइडिया क्या है, ऐसा जजमेंट क्यों आ रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज शोइंग यू दैट पर्टिकुलर लाइट कि इन विच डायरेक्शन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मूविंग. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हियर ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट सेड इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हियर सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड वन फैक्ट. In fact, in Keshwanand Bharti, they looked into the proceedings of the Constituent Assembly, and then they found out that the preamble was adopted towards the last of the Constitution. Now, see the beauty of the Constitution makers, how they started this. कि सबसे पहले जब Constituent Assembly मिलती है तो पहली चीज जो पढ़ी जाती है वो है Objective Resolution, which was prepared by Nehru, और Objective Resolution से ही बना preamble. So he read out the objective resolution that what should be the objective of this assembly when we are going to make the constitution. But it was not adopted at that point of time. Adopt उसको last में किया गया. Why? Because हो सकता है कि उस objective को लेके हम चलते हैं और बीच में उसमें change आ जाए. तो ऐसा ना हो कि objective और जो main content है वो different हो जाए. तो इसीलिए हमने objective पढ़ लिया, इस दिशा में हम बढ़ेंगे, लेकिन उसको हमने adopt किया towards the last. Just to make sure कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव और मेन कंटेंट में डिफरेंस आ गया. एंड इट वाज प्रॉपर्ली अडॉप्टेड थ्रू मोशन एंड देयरफॉर इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज जस्टिफाइड. थर्ड क्वेश्चन, कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड? क्योंकि ये क्वेश्चन 1973 तक में सेटल हो जाएगा, अमेंडमेंट होता है 76 में. Now here the Supreme Court here said it cannot be amended.
not be amended, यहाँ पे कहा it can be amended. Why? Because let us say if preamble is a part of the constitution, यदि constitution में यदि दो पार्ट हम लेके चलते हैं, एक है अपना preamble, एक है the main content of the constitution. यदि इसमें we are allowing amendment under article 368 और इसमें हम amendment नहीं अलाउ करते हैं, तो फिर क्या होगा कि by each and every amendment ये वाला पार्ट आगे निकल जाएगा and preamble will remain static. आज तक हमने 106 अमेंडमेंट किए, यदि हमने preamble में नहीं अलाउ किया तो this part will go in a different direction and this will remain there itself. And therefore it is required that preambles should be allowed to be amended so that it can keep pace with the main content of the constitution. And the second reason is, जब एक बार आप बोल चुके हैं कि it is a part of the Indian constitution, then article 368 applies on the entire constitution, and article 368 gives the power to amend the constitution, and therefore the power to amend the constitution given under article 368 will also apply on the preamble. And this debate was also settled that yes, preamble can be amended, and it has been amended by 42nd amendment. ठीक है, we'll write this in the next class. Thank you. Yeah.